Hello everyone, Clat 2024, the wait is over. Yes, so notification already आ चुका था and now the applications are also open. 1st July 2023 यहाँ से application start हो जाएंगे आपके Clat 2024 के लिए एग्जाम जो कि December 2023 और I would say 3rd December 2023 में जो एग्जाम होने वाला है. Now in this particular video I will take you in detail about all the changes what consortium is talking about. I will also discuss section-wise analysis, what exactly you can expect in the paper as far as December 2023 paper is concerned. Also, I will take you guys to the detail or step-wise step process to fill up the forms, things you need to understand, things you need to take care of while filling up the form. सो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जाएंगे दिसंबर के अंदर जो एग्जाम होने वाला है 3rd December 2023 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है. सो द फर्स्ट थिंग इज देयर आर नाउ 24 पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज, राइट. सो सिलवासा कैंपस जो कि लेटेस्ट एडेड कैंपस है गुजरात के अंदर, यूनियन टेरिटरी गुजरात के अंदर, एंड अगरतला कैंपस, ये दो कैंपसेस जो नए ऐड हुए हैं. एंड देयर आर टोटल 24 कैंपसेस एनएलयू जो कि क्लैट स्कोर के ऊपर एडमिशन देंगे टू द स्टूडेंट्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस नोटिफिकेशन एंड व्हाट दिस वेबसाइट, क्या क्या इंफॉर्मेशन वेबसाइट से आ रही है. आई विल जस्ट टेक यू गाइस थ्रू दैट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट यूजी सिलेबस एंड गाइड, पहले ये ले चलते हैं बिकॉज जैसे ही डिस्कशन शुरू हुआ था कि 120 क्वेश्चंस आ जाएंगे बिकॉज अर्लियर देयर वर 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, और उसके बाद क्लैट ने थोड़े ही दिन पहले ये नोटिफिकेशन दिया था दैट नाउ देयर विल बी 120 क्वेश्चंस, एंड वो 120 क्वेश्चंस जो है आपको 120 मिनट्स के अंदर करना पड़ेगा. एंड देयर विल बी लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस कि पेपर हार्ड हो सकता है, क्वांट स्टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है. सो लेट्स सी are there really any changes if I talk about 120 question paper. And one thing जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि आपको यहाँ पर कुछ भी, so if you see here what they are saying is overall the paper is designed, it is a test of aptitude and skills. ये aptitude और skill का टेस्ट है and which is necessary for legal education. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीगल एजुकेशन के लिए कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करेगी. सो आई विल कम टू दैट. और वो क्या बोल रहे हैं बारी बारी, और क्लैट कंसोर्टियम हैज बीन वेरी क्लियर in reiterating this fact again and again that they don't need a candidate with a prior knowledge on legal. So that is something which is coming up from consortium website again. So क्या बोल रहा है ये? So again we have discussed this. It's a 2-hour test, which means it's a 120-minute test with 120 odd questions. पहले जो कि 150 questions होते थे, right? And every question which will carry 1 mark each, and negative marking will be 0.25 for every wrong answer. So no changes on the marking pattern here. If I talk about sections, अगर मैं sections की बात करूंगा, again there will be no changes in section as such as far as the upcoming CLAT paper is concerned. We are talking about English language, current affairs including general knowledge, so they are very clearly mentioning that. लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है. ये 5 चीजें अगेन अगर मैं सेक्शन के अंदर बोलूंगा, सो ये 5 चीजें आपके सेक्शंस के अंदर आ रहे हैं, राइट. आई कम अप, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट अप्रॉक्स 50% ऑफ द पेपर इज लीगल एंड जीके, और अभी भी कंसोर्टियम ने जो लेटेस्ट अपडेट डाला है वेबसाइट के ऊपर, it is basically in sync with what we have discussed last time. So let's talk about, let's decipher what is these sections all about. So let me first start with English language, right? So that is something, अच्छा इन्होंने अगर आप देखेंगे बड़ी डिटेल के अंदर बताया है कि what is expected from students and you need to work accordingly, right? So let's see what they are talking about. So they are talking about a passage of 450 words each. Right, so very clearly they are saying 450 वर्ड्स के आसपास का पैसेज होगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सो जो लोग 700 वर्ड्स 800 वर्ड्स के पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट, राइट. सो 450 वर्ड्स जो पेपर है वही हमेशा ट्राई करना चाहिए. द पैसेज विल बी डिराइव्ड फ्रॉम कंटेम्पररी और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग. इन शॉर्ट व्हाट दे आर सेइंग इज कहीं से भी आ सकता है, राइट. सो दे आर सेइंग कंटेम्पररी, हिस्टोरिकली, fiction, non-fiction.
So you should be ready कि पैसेज कहीं से भी आ सकता है and would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes. So they are giving 450 words का passage to be read in let's say 5 minutes, right? ये चीज आपको करनी है, right? And I'm sure जो लोग रीडिंग कर रहे हैं, जो लोग एटलीस्ट अभी तक बॉक्स देते आए हैं, and I'm sure a student who is preparing for CLAT एंड जो जुलाई में बैठे हैं शायद तुमने अभी तक 20-25 मॉक्स दे दिए होंगे एंड आई डोंट थिंक दैट दिस विल बी अ चैलेंज एज सच, राइट? सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. अब वो बोल रहा है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. यहां तक उन्होंने बात करी थी पैसेज के बारे में. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द मेन पॉइंट. अगेन एंड अगेन हम लोग क्लासेस के अंदर बोल रहे हैं मेन पॉइंट, द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, ये आपको जो है देखना पड़ेगा. And any arguments and viewpoints discussed or set out in the passage. So आपको main point देखना है और उसके साथ साथ आपको एक argument बताना है कि author क्या argument वहां पर propose कर रहा है. You have to understand the premise, you have to understand the conclusion. So that is what you need to understand. The first thing is you need to comprehend. Okay, we know that that's a reading comprehension. Now, drawing the inferences, drawing conclusions based on the passage. राइट? सो यू कैन एक्सपेक्ट इंफरेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस. और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं द मोर यू प्रैक्टिस द सीआर बेस्ड क्वेश्चंस द मोर इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सच बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हियर. समराइज द पैसेज, right? So you should be good enough to summarize the passage, and that's what a student who is opting for legal studies should be good at. राइट? बिकॉज ये जरूरत आपको आगे पड़ेगी. और इसलिए मैंने बोलता हूं हमेशा दैट इट इज अ पेपर बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, हाउ गुड यू आर इन कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड व्हेन यू गो फर्दर इन योर लॉ कॉलेजेस. Compare and contrast the different arguments. So you need to understand what are these different arguments all about. Is there any flaw in the arguments, right? Is there any supportive evidence in that argument? Is there any particular thing which is weakening that argument? ये सारे questions आप expect कर सकते हो RC के अंदर. Understand the meaning of various words. So यहाँ पर they are very clearly saying that you can expect questions on vocabulary as well. Because मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है चीज करने के लिए, सर vocabulary क्यों चाहिए? Why should I go ahead and get into words, याद करना है, रटना है? Why this is needed? Because you can expect questions. So this is what. So अब अगर vocabulary questions आ जाते हैं and let's say if there are 24 odd questions and 20 to 24 odd questions और उसके अंदर अगर आप देखते हैं कि 5 से 6 questions vocabulary के हैं, so don't be surprised because they have mentioned it very clearly in this particular section. Second is when we are talking about this current affairs. Now this is very interesting because English कहीं ना कहीं स्टूडेंट बोलता है संभाल लेंगे, जीके के अंदर पता नहीं लगता कि क्या करें क्या नहीं करें. और जो लोग जीके बाय वीके फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक द टॉप 100 एमसीक्यूज जो हर मंथ स्टूडेंट को दिए जा रहा है डेली बेसिस पे, जो करंट टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक वो स्टूडेंट्स इस चीज को चैलेंज फेस करेंगे while solving the questions. Let's see why I am saying this. जो students follow कर रहे हैं GK by VK routine regularly, let's see why I am saying this. So the first thing what again they're talking about is you can again expect a passage of 450 words, right? And again they are saying the passage can be derived from news, journalistic sources, and other non-fiction writing. So your focus has to be reading all these things in detail. राइट? इसीलिए मैं बोलता हूं और आपको बारी बारी हम लोग बता रहे हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज from those particular sources you can expect your passages in GK. Do you really need to read a passage as far as solving GK is concerned? Not really, right? And I think वो हम लोगों ने बारी बारी जब हम एनालिसिस कर रहे हैं मॉक्स का, we have seen it कि आपको पूरा GK पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? So what they are talking about, the questions may include an examination of legal information or knowledge. Now guys, this is very important. Legal knowledge की चीजें बाहर आ रही हैं and I think that is what you need to understand. इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं जब हम daily basis पे आपको, and I'm sure you are getting a legal updates on daily basis, right? So on your WhatsApp groups, legal updates has been shared. Please make sure legal updates को regular पढ़ना शुरू करें because
ठीक है, डायरेक्ट लीगल नॉलेज क्वेश्चन जो किसी टाइम में जब क्लैट 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होता था तब आते थे, बट दैट डजंट मीन कि आगे नहीं आ सकते हैं. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग वेरी क्लियरली. यू शुड बी रेडी विद दैट. The question may include an examination on legal information or knowledge. Now the student may ask question, what exactly do you mean by legal information or knowledge? When I'm saying legal information or legal knowledge, you can take any recent landmark cases. You can take any recent judgments which is being, I mean, जो अभी latest trend में चल रहे हैं. For example, when we are talking about same-sex marriages, when we are talking about, let's say, divorce cases, when we are talking about marriage laws, ये सारे latest trend में चल रहे हैं. You can expect questions related to that for sure. So, what you can expect? What kind of questions you can expect in your GK? Again, contemporary events of significance from India and around the world. Right, so it has to be India and around the world. Whatever contemporary news in trend, जो ट्रेंड में है, बिल्कुल आप फॉलो कीजिए. और इसलिए हम लोग हमेशा आपको क्लासेस के अंदर भी बोल रहे हैं that this is something which you need to understand. आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए. आर्ट्स एंड कल्चर, राइट. सो आपने कई बार क्वेश्चन देखे हैं हम लोगों ने क्लैट के अंदर, when they are talking about GI questions, right, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. GI टैग्स के ऊपर हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है. इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर श्योर, व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनल लेवल पे, G20 समिट फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे, हम लोग लेट्स से नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करें, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस इंटरनेशनल अफेयर्स व्हाटएवर इज हैपनिंग. हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो शायद पास्ट में हो चुके थे, बट दैट डजंट मीन इट इज हिस्ट्री, दैट स्टिल उसका सिग्निफिकेंस है. सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस as far as GK is concerned, and I think इसके ऊपर डिटेल वीडियो on GK specifically will come out very soon. Now here we go, हमारा फेवरेट सेक्शन लीगल. लीगल के अंदर हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, लेट्स कम बैक टू दैट एज वेल. अगेन 450 वर्ड्स, वेरी क्लियरली वो बोल रहे हैं हम आपको 450 वर्ड से ऊपर पैसे नहीं देंगे. तो अब हम लोग की रीडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट, आई विल कम अप विद दिस वीडियो वेरी सून एज वेल. राइट, सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज द पैसेज मे रिलेट टू फैक्ट सिचुएशंस. राइट, सो आपकी फैक्ट सिचुएशन, समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, जो आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं, और सिनेरियोज व्हिच इन्वॉल्व लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉरल फिलोसफिकल जो इंक्वायरीज आ रही हैं, इन सब के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. अगेन, यू डोंट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज, आपको पहले कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए इसको करने के लिए. And you will benefit, very important, you will be benefited from general awareness of the contemporary legal issues. So the issues which are going right now, अगर आपने वो पढ़ रखे हैं, so आपको शायद वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े. Again, the questions what they are talking about specifically is identifying and infer the rules and principles set out in the passage. Now, interesting, please see to it. So आपको passage के अंदर हर चीज दिया हुआ है. So the principles are already set out in the passage. You don't have to remember anything. And you need to just identify the principle and infer the rules. That is point number 1. No prior knowledge. So I'm mentioning here, you need no prior knowledge in answering the question because everything is mentioned in the passage. Right? Second, apply. You need to apply the rules. You have find out what exactly the inference or what exactly is the rule we are talking about. Now you need to apply. So identify, apply, and understand how changes to the rules or principle may alter their application. Now, if you have identified and while applying, they may change the situation, and you need to be very smart in understanding that particular thing. So, no prior knowledge. So, legal is again reading, and I would say more than reading, it's comprehension. This is what legal is all about. Now, the last section, I will take some time here to explain logical reasoning because that's where majority of the students are facing problems. Now when I'm talking about logical reasoning, हम लोग now एक चीज तो बहुत क्लियर है, like with this notification coming out, एक चीज बहुत क्लियर है that जो हम लोग सीरीज, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे हम जो क्वेश्चंस जो बोलते हैं कि शायद आ सकते हैं, that शायद थिंग, I mean क्लैट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं आएगा, so don't worry about it. Right, don't worry on that. So they'll not, you should be assured कि वो सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाले हैं. What you can expect is recognizing an argument, its premise and conclusion. That's what we are doing in the classes, right? Because that's where
जो हमारा लास्ट क्लैट का पेपर था वहां से जो निकल के आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे विल आस्क एंड हम लोग वही प्रिपेयर कर रहे हैं. रीड एंड आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट्स, सेम चीज जो उन्होंने मेंशन किया है वेरी क्लियरली. अगर आपने देखा हो इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सेक्शन के अंदर, वहां पर भी आपको यही करना था. ठीक है, आर्ग्यूमेंट से हम आर्ग्यूमेंट से वी आर डिराइविंग ऑन प्रीमाइस एंड कंक्लूजन. सो अगेन जो चीज आपको इंग्लिश के अंदर करनी है वो चीज आपको यहां करनी है. Critically analyze the pattern of reasoning. So you need to understand the pattern of reasoning. And when you understand the pattern of reasoning, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि basically talking about mimicking the argument, right? Talking about which of the following option is having a similar reasoning as to what is given in the passage. So these kind of questions you can expect. And assess how conclusion may depend on particular premise, how conclusion may be strengthening, weakening. So everything जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, no changes as such. Infer, again English के अंदर हमने देखा no changes as such. Draw relationship and analogies जो मैं बात कर रहा था अभी, analyzing the patterns. Identify the contradictions, equivalence, and assess the effectiveness of argument. So the logical reasoning, it all boils down to understanding an argument, because that is what a student who is opting for legal studies or legal as a profession has to profess throughout his or her life, and that is where it is very logical to ask these questions. And students जो कि LSAT का एग्जाम भी देने का प्लान करेंगे आगे जाके, you can also expect this logical reasoning in that LSAT examination as well, though it is different in terms of the kind of questions which they ask, but the basics will still remain the same. And at last, favorite is quants. Now जब हम क्वांट्स की बात कर रहे थे, क्या क्वांट्स टफ हो जाएगा? पहली बात तो क्वांट्स का 10 से 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन क्वांट्स, so you should be happy there. 10% of the paper आपका क्वांट्स आएगा. And again, what they are talking about is apply 10 standard mathematical operations, right? And then what they are talking about, very clearly they are mentioning ratio and proportion. First unit, so every time when we are talking about, so ratio and proportion, the basic algebra, the basic mensuration and the statistical estimation. So this is what they are saying कि आपको सिर्फ statistical estimation होना चाहिए. So approximation techniques, आपके basic algebra, जहाँ पर percentages, profit and loss, ratio and proportion, average partnerships. So I think this is something should be sufficient enough, I feel, as far as to solve quantitative technique section as far as December Clat 2023 is concerned. So आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. And then at last what they are mentioning is that the consortium, it is planning to publish various preparatory materials for UG, and what it would be guides on the question paper and sample questions. So you will get this as well. When they will launch it, ऐसा कोई भी mention नहीं किया है. Model question paper, this is what they launch every year. And instruction material and exercises for each of the subjects. So all these things will come, and from there, and we'll come up with detailed video on this as and when it comes. And with that, we will be clear. I won't say very clear. It will be slightly clear what exactly we can expect in the Clat paper. Where I'm saying not very clear, because last time when they consortium released their sample paper, and when you see their section which was quantitative aptitude, so we felt that ये तो, I mean, it's nothing related to 10th, शायद 11th 12th का बच्चा इसको solve करेगा. So that was the thing which came up when this paper was launched or released as the sample paper. But then in actual paper, maths was very different to what it was there in the sample paper. It was in line with what they are mentioning on a 10th standard level only, right? So this is what your sections look like. So इसको अच्छी तरीके से, I don't think there is any challenge as such. मैं आप सारे students को बोल रहा हूँ, कोई भी challenge नहीं है यहाँ पर, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. Everything will remain the same, right? So the only thing is that हमें अब ये देखना है कि जब 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज करना है, क्या करना है, and which should be in sync with the 450 words ka passage what consortium is talking about, right? So I'll be coming up with a detailed video on step-by-step guide to form filling. Stay tuned and keep watching Ekoching.